गुजरात में आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हुई है। सावन महीने के पहले दिन वडोदरा के महादेव मंदिर में भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिली। श्रावण महीने के पहले दिन वडोदरा में भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वडोदरा के अलकापुरी जेतलपुर के करीब 100 साल पुराने श्री काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रावण के पहले दिन मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुबह सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक किया और बिली पत्र अर्पित कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्तिमय माहौल देखने मिला। आ मंदिर श्री काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर जेतलपुर रोड वडोदरा अलकापुर आ श्री काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर है। सर सयाजीराव गायकवाड स्थापित है। आ मंदिर की विशेषता एवं है कि आ मंदिर में जे पण भावी भक्तो दर्शनार्थी आवे छे एनी सर्व मनोकामना पूर्ण थाय छे। एमना दुख एमना कष्ट हरी जाय छे। आ मंदिर जल चढ़ावाथी एना हर एक पापों ने मुक्ति प्राप्त थाय छे। श्रावण महीने के पहले दिन वडोदरा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कमाटी बाग नजदीक के श्री कामनाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर बिल्व पत्र अर्पित किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्तिमय माहौल देखने मिला। આજથી પવિત્ર શ્રાવણ માસની શરૂઆત મઘા નક્ષત્રના ઉત્તમ સંયોગ સાથે થયો છે। શ્રાવણ માસ એ ભગવાન શિવની ઉપાસનાનો સર્વશ્રેષ્ઠ મહિનો છે। શ્રાવણ માસમાં ભગવાન શિવનો વાસ પૃથ્વી પર હોય છે। શિવ એ જ જીવ છે ને જીવ એ જ શિવ છે। માટે આપણા શરીર અને પરિવારના રક્ષણ માટે ભગવાન શિવની ઉપાસના શ્રાવણ માસમાં કરવી અતિ શ્રેષ્ઠ છે। શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભગવાન શિવને વિવિધ ઉપચારો, દ્રવ્યો, જલાભિષેક, દુગ્ધાભિષેક, પંચામૃતથી વિવિધ અભિષેક કરી પોતાનું અને પરિવારનું કલ્યાણ કરો। શ્રાવણ માસની અંદર ભગવાન શિવજીને વિશેષ કરીને બિલ્વ પત્ર અર્પણ કરો અને વિવિધ નૈવેદ્ય અર્પણ કરો। ખાસ કરીને આ અત્યારે આપણે કામનાથ મહાદેવ ખાતે ઊભા રહ્યા છે। ભગવાન કામનાથ મહાદેવ નવનાથ વડોદરાના રક્ષક નવનાથમાંથી એક છે અને વડોદરાનું રક્ષણ કરનાર દેવ છે। ભક્તોની કામના પૂર્ણ કરે છે અને આ શ્રાવણ માસમાં ભગવાન શિવને વિશેષ કરીને દર્ભયુક્ત જળથી અભિષેક કરવાથી અસાધ્ય રોગોમાંથી રાહત પ્રાપ્ત